Hello students, good morning. How are you all? Hope you all are fine, right? And how was your UTI exams? Yes, I hope you have done very well, right? So, आज हम क्या करेंगे बच्चों? सेमेस्टर का स्टार्ट करेंगे. We will continue. Okay? Yes. Whenever you are doing any mischiefs, है ना? जब आप मस्ती करते हो घर पे, then what you are doing? What your mother is telling to you? That you are very naughty. When you are very small, you are very good boy or girl. Now you are becoming very much naughty. है ना? तो ये क्या हुआ? पहले आप अच्छे बच्चे बनते थे, अभी कैसे नॉटी और मस्तीखोर हो गए हो, है ना? तो मम्मा क्या बोलती है? पहले अच्छे थे, अभी मस्ती करते हो, नॉटी हो गए हो. तो ये क्या हुआ? मम्मा ने आपको कंपेयर किया, है ना? और जब भी आप बाहर जा रहे हो, whenever you are going with your parents or mother in a park, okay, and when you are seeing a balloon, you are telling that you want a balloon, yes, है ना? आप जिद करते हो ना बलून के लिए कि मुझे लेके दो, है ना? और दूसरे बच्चे जो होते हैं वो नहीं करते हैं, तो मम्मा क्या बोलती है? देखो वो दूसरे बच्चे कर रहे हैं जिद जितना आप कर रहे हो खिलौनों के लिए फॉर द टॉयज. बोलती है ना मम्मा कि नहीं बोलती है? आपको बताओ. मम्मा ने आपको क्या किया? कंपेयर किया, है ना? कि आपको और दूसरे बच्चों के साथ आपको कंपेयर किया, है ना? तो आज हमारा चैप्टर कौन सा है? कंपैरिजन, है ना? कंपैरिजन है. कंपैरिजन मीन्स कंपेयर करना एनीथिंग, वेदर इट इज अ टॉल, शॉर्ट, ओके, वी आर कंपेयरिंग दैट थिंग्स. ओके, समझ में आया कंपैरिजन क्या है? यानी दो या तीन चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, वो है कंपैरिजन. ओके, सो नाउन क्या है उसके पहले मुझे वो बताओ. जो नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स एक्सेट्रा आर नाउन्स. ओके, ये सब क्या है? नाउन है. तो सम एडजेक्टिव्स, है ना? सम एडजेक्टिव्स हेल्प अस कंपेयर टू थिंग्स. हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, है ना? एंड से हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, और दिखाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है ना? वी आर शोइंग द डिफरेंस बिटवीन देम. दिस एडजेक्टिव्स जनरली एंड विथ ER whenever we are comparing two things. Okay, how many? When we are comparing only two things, we are adding at the end ER. Okay, understood? When we are comparing two things, the words end with ER. Okay, now moving to our next. You can see over here, for example, adjectives are not only used to describe noun. It is not only to describe the nouns but also used to compare the naming words. They are comparing also. He is a brilliant student, है ना? Student is a noun, okay, and brilliant is an adjective. How? What type of student it is? Brilliant. Okay, so the adjective here is brilliant. So let us move on. Now what we can see? Yes, example is here. Ravi is taller, TALLER, taller than Rohan. You can see Ravi is standing here and Rohan is standing here. Who is taller? Yes, Ravi is taller. Ravi is taller than Rohan. Ravi लंबा है रोहन से. Okay, now next. The snake is longer than worm, है ना? You can see a worm here and you can see a snake here. Who is more longer? Obviously snake. Snake सबसे लंबा है and worm कितना होता है? छोटा, eared, है ना? वो छोटा होता है. So what you can see here, the adjective is longer and it is end with ER. It is end with ER, and here taller is end with ER. So tall, taller. Okay, the simple adjective word for tall. Okay, tall comparing to taller. Okay, tall, taller, and here long, longer. Yes, when we are adding ER, yes, when we are comparing two things. Okay, when we are comparing only two things, at that time we are using ER at the end. Okay, now some adjectives help us to compare more than two things. Sometimes we are comparing more than many things, है ना? And say how they are different from one another.
हम उनको कंपेयर करते हैं, एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों के साथ हम कंपेयर करते हैं एंड वो डिफरेंट भी हो जाती है। दिस एडजेक्टिव्स जनरली एंड विथ EST, EST से वो कंप्लीट होता है। ओके कैसे? व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन 2 थिंग्स, ओके 2 से ज़्यादा होता है तो EST लगाते हैं एंड व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 थिंग्स वी आर एडिंग ER एट द एंड। ओके वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द बिफोर देम, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ओके रवि इज टॉलर देन रोहित, यू कैन सी रवि टॉलर है रोहित से, लंबा है। You can see Rohit, Ravi and Akhil. Okay, 3 boys are standing here and you can see Ravi is taller than Rohit and the Akhil is tallest. Akhil is the tallest than Rohit and Ravi. Okay, Akhil इन दोनों से लंबा है। Okay, समझ में आ गया? Have you understood now? Ravi is taller than Rohit. Akhil is the tallest, है ना? Both of them, इन दोनों से अखिल लंबा है। राइट नाउ वी अंडरस्टूड व्हेन वी हैव टू ऐड ER एंड EST। ओके वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन वी आर कंपेयरिंग ओनली 2 थिंग्स वी आर adding ER at the end of the adjective, okay, and when we are adding EST at the last, yes, when a comparison is done between more than 2, 2 से ज़्यादा भी हम कंपेयर जब करते हैं वी आर एडिंग EST एट द एंड ऑफ द एडजेक्टिव एंड बिफोर दैट वी आर एडिंग द। ओके यू कैन सी हियर अखिल इज द टॉलेस्ट, अखिल इज द टॉलेस्ट। ओके इतना समझ में आ गया? सो वी विल डू नाउ सी द एग्जाम्पल ऑल्सो। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। Okay, smart, smarter, smartest. Okay, this is our example. So now more examples we can see. Big, bigger, biggest. Rare, rarer, rarest. Small, smaller, smallest. You can see ER. Okay, comparison between 2 things or people. Okay, we are adding ER at the end. And comparison among many things or people we are adding EST at the end. Thin, thinner, thinnest. Long, longer, longest. Old, older, oldest. Okay, let us do our exercise. First one, complete the sentences with suitable adjectives. Here the hints are given, we have to write it. Smaller, shorter, longer, older. Okay, SMALLER smaller, SHORTER shorter, LONGER longer, OLDER older. Okay, first one, the man is dash than the boy. What you can see here, boy is there and a grandfather is there, है ना? तो इसमें से old कौन हुआ? Yes, man. The man, MAN, man is older, OLDER, older than the boy. Second, a chair is dash than a bed. You can see a bed is more longer and the chair is smaller, right? So what we will write? SMALLER, smaller. Third one, YAMINI, Yamini is dash than her brother. You can see a height. Her brother is standing here and she is standing here. Who is more longer? Her brother. So we will write Yamini is shorter, SHORTER, shorter than her brother. Yamini is shorter than her brother. Fourth one, a rabbit has dash ears than a cat. You can see rabbit and a cat. Whose ears are more long? Yes, rabbits, right? The cat's ears are very small and the ears of rabbit are very long. A rabbit has longer, LONGER, longer ears than a cat. Okay students, have you understood? Okay, once again I am repeating. The man is older than the boy. A chair is smaller than a bed. Yamini is shorter than her brother.
a rabbit has longer ears than a cat. Okay, now our next question is question B. Choose suitable adjectives from the ones given and complete the following sentences. Here the adjectives are given, we have to choose and we have to complete the sentences. So what are our adjectives? Deepest, longest, coldest, cleverest, shortest and fastest. Okay, first one, yesterday was the dash day of this winter. Yesterday कौन सा day था? Yesterday was the day of this winter. winter का कौन सा डे था ऐसा? yes, coldest, coldest, coldest यानी बहुत ही ठंडी वाला. yesterday was the coldest day of this winter. don't swim in the dash part of the pool. कहाँ पे स्विम नहीं करना है बच्चों? yes, deepest, बहुत ही ऊंडा, है ना? don't swim in the deepest, deepest, deepest part of the pool, है ना? जहाँ पे बहुत ही गहराई होती है उस पार्ट में नहीं जाना है स्विमिंग पूल में. ओके, the dash boy will win the quiz. कैसा बॉय क्विज जीतेगा? which boy will win the quiz? yes, who is more intelligent, more clever. cleverest, cleverest. the cleverest boy will win the quiz, है ना? जो ज़्यादा होशियार होगा, इंटेलिजेंट होगा, क्लेवर होगा, that boy will win. okay, the cleverest boy will win the quiz. fourth one, the dash girl won the race. है ना? रेस चल रही है, who is winning? yes, those who run very fast. okay, the fastest, fastest girl won the race. fifth one, pick up the dash pencil from the bunch. yes, bunch में से कौन सी पेंसिल उठानी है? सबसे लंबी, longest, longest, longest. pick up the longest pencil from the bunch. sixth one, I took the dash jump. है ना? कैसा जंप लिया? shortest, shortest, shortest. I took the shortest jump. okay, now you have to complete this in your English grammar textbook itself. okay. You have to practice it again and again. Till then you have to take care of your. okay students, bye bye.